इस बैच में हम लोग पोएट्री का एक्सप्लानेशन लिख रहे हैं। अच्छा, जितना हम लिखा रहे हैं सब फेयर कॉपी पे लिख रहे हो ना? तो यार व्हाट्सएप करके भेजो, कम से कम हम देखें कि कैसे लिख रहे हो हैं? काली पेन गोरी पेन लगा करके खूब बढ़िया से लिख के हमारे पास भेजो। कुछ विद्यार्थी लिख के भेज रहे हैं, तो आपको भी हम सलाह देंगे कि आप उसे लिखकर हमारे पास भेजें, तभी उसका आनंद आएगा। तो जब आनंद आएगा तो मौज आएगी तो आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर पाना एक कला है। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ाए। शुरू करें, लिखो ऑर्डर। आंसर नंबर जो भी है आपका, आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लानेशन डैश पोएट्री। आज हम लोग लिखेंगे तो बेटा द पासिंग ऑफ अर्थर के बारे में। ठीक है, आंसर नंबर सो एंड सो जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लानेशन डैश पोएट्री। नीचे लिखा होगा हैंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर ले लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैंड्स बोले, एंड स्लोली डैश डैश द वर्ड तक, एंड स्लोली डैश डैश द वर्ड तक। रेफरेंस अंडरलाइन कर दिया, रेफरेंस यानी संदर्भ। these opening lines are extracted from the poem The Passing of Arthur, ARTHUR, from The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson, who was one of the greatest poets of Victorian age, who was one of the greatest poets of the Victorian age। साफ साफ लिखा, एक बार फिर लौट। These opening lines are extracted from the poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson, who was one of the greatest poets of the Victorian age। साफ साफ लिखा। पाठ का नाम, लेखक का नाम स्केच पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉलम कर दो। कर दिया? अब दूसरी नोट कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट। बोले कॉन्टेक्स्ट है wounded अर्थर, wounded माने घायल, wounded अर्थर कामा a legendary king,
ए लेजेंडरी किंग, पौराणिक राजा। अरे केस ने पोजिशन लगा बोल रहे हैं, wounded Arthur, comma, a legendary king is sitting a small boat, is sitting in a small boat with his three queens, with his three queens, putting on black veils, VEILS, घूंघट, putting on black veils on the shore of the sea, shore of the sea, समुद्र का किनारा, on the shore of the sea। एक बार फिर मिला लो, कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, बोले मिला लो फिर से। wounded Arthur, comma, a legendary king, पौराणिक राजा। लेजेंडरी किंग माने क्या होता है? पौराणिक राजा। फिर से wounded Arthur, comma, a legendary king, comma, is sitting in a small boat with his three queens, putting on black veils on the shore of the sea। दृश्य पूरा समझ गए ना? अब एक्सप्लेनेशन बोले, एक्सप्लेनेशन लिखो क्या? सिटिंग इन ए स्मॉल बोट, sitting in a small boat with his three queens, wounded Arthur advises his faithful soldier, wounded Arthur advises his faithful soldier named Sir Bedivere, SIR, Sir Bedivere, BEDIVERE, Sir Bedivere, लिख दिया? Advises Sir Bedivere not to weep, on his departure, not to weep on his departure। फिर से एक बार क्या होता? Sitting in a small boat with his three queens, wounded Arthur advises his faithful soldier named Sir Bedivere not to weep on his departure, because change is the law of nature, because change is the law of nature। Program, the old culture and customs are cut down, the old culture and customs are, first बोलो, because change is the law of nature, लिख दिया? Because change is the law of nature। Program, the old culture and customs इसको ऐसा लिखो, द प्लांट्स ऑफ ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स, ऐसा लिखो,
The plants of old culture and customs are cut down, and a new plant of civilization grows in the society. Clear? The bushes of the plants of old culture and customs are cut down, and a new plant of civilization grows in the society. ज़्यादा अच्छा है, पढ़े बेटा. The bushes of old culture and customs. जहाँ पहला वाला प्लांट्स दिखाया था वहाँ the bushes लगा दो, ज़्यादा सही है. The bushes of old culture and customs are cut down, and a new plant of civilization grows in the society. इसे पढ़ा दो बेटा. सही कर लिया? Good. Addressing Servandwear, King Arthur says that God is the Almighty. Program. Almighty God adopts a number of tricks. Almighty God adopts a number of tricks to fulfill his desire, at any cost. Program. King Arthur was trying his best. To remove the evils and abuses of the society. King Arthur was trying his best to remove the evils and abuses of the society. Program. If he got success in his mission, people of the society would be happy, and they would call the Jai Jaykar of King Arthur. They would call the Jai Jaykar of King Arthur and forget the existence of Almighty God. Program. In this way, the rule and regulation
The rule and regulation provided by God, the rule and regulation provided by God on earth, on earth would be arrested and corrupted, would be arrested and corrupted. Note program. Addressing surveyor. Program. It means program badana. It means God Himself. It means God Himself was afraid of King Arthur. King Arthur. Program. Addressing surveyor. Addressing surveyor. King Arthur says, that it is the will of God. Will माने इच्छा. W-I-L-L. It is the will of God under which it is the will of God under which He has been wounded. He has been wounded in the battlefield. It is the will of God under which He has been wounded in the battlefield. Otherwise, nobody could face. Otherwise, nobody could face the challenges. Nobody could face the challenges of his sword. Of his sword. Named Excalibur. Named Excalibur. लिख नोट्स नीचे लिखो नोट्स टाइप ऑफ पोएम डैश करके ए ब्लैंक वर्ड्स BLANK ब्लैंक वर्ड्स VERSE दूसरी राइम स्कीम क्या के डेस्क हो इरेगुलर राइम स्कीम है ही नहीं है इरेगुलर IRRE इरेगुलर फिर उसके नीचे लिखो फिगर्स ऑफ स्पीच simile and metaphor simile and क्या metaphor फिर उसके नीचे लिखो डिक्शन सिंपल कामा स्वीट म्यूजिकल melodious inspiring and lucid
एंड ल्यूसिड, LUCID। फिर नीचे नोट का पर्पज, बोले बाय कंपोजिंग द पोएम, the poet has taught us, that prayer does miracle, अर्थ क्या हुआ? प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। प्रेयर डज मिरेकल, नोट कर लिया। तो इस प्रकार से जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे पाठक स्टाइल में, तब अच्छा स्कोर होगा। सावधानी यह भी कट पिट कॉपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा होगा। तो ये कैसे होगा? एक बार यहाँ लिखा, एक बार घर जाकर दोबारा फिर लिखो, फिर बीच में हम एक बार बताएंगे आपको लिखना होगा, तब फिर बोर्ड परीक्षा भेजेंगे। थैंक यू। ओके।